एडिटिंग क्यों enable कर in screen? Okay, so we have already done all this in the last lecture. We'll be starting with the cardiac tamponade that we did. Okay, we did flail test. Now let's start cardiac tamponade and we'll be doing the rest of trauma. So cardiac tamponade is the collection of blood between the heart and the pericardium. This is the heart muscle, this is the pericardium, and it is the collection of blood. And the source of blood can be from the coronary arteries that are on the outside of the or from the rupture of the myocardium. And the pericardium doesn't hold up only 200 to 300 ml of blood before the signs and symptoms of pericardial tamponade start. So because this is a very limited space, and if blood is collected between the heart and the pericardium, it will cause the heart to not to recoil. Heart का जो relaxation phase है वो नहीं होगा, because यहाँ पे blood accumulated होगा. जब heart recoil नहीं होएगा तो इसका जो after load है वो venous return नहीं होगा and preload कम हो जाएगा. Fine, and ultimately afterload भी कम होगा. So this leads to the obstructive cardiac failure. So what do we do in pericardial tamponade? It usually happens in the penetrating trauma, and blood and fluids wait. So blood and fluid, they leak into the pericardial sac which surrounds the heart. And as the pericardial sac fills, it causes the sac to expand until it cannot expand anymore. Fine. So what are the signs and symptoms of cardiac tamponade? We call it the Beck's triad. ठीक है, Beck's triad क्या होता है? There is muffled heart sounds. Beck's triad याद रखने की चीज है. 3 signs and symptoms होते हैं which are pathognomonic of cardiac tamponade. Muffled heart sounds, jugular venous distension, and hypotension. Patient will be hypotensive, patient will have jugular venous distension, and patient will have muffled heart sounds. Tachycardia you find in any kind of shock. Paradoxical pulse भी आपको massive pneumothorax में मिल सकती है. Pulse pressure narrow हो सकता है in any kind of shock. But muffled heart sounds are, along with jugular venous distension and hypotension, are pathognomonic of cardiac tamponade. This is the thing to remember prior. So how do you differentiate between cardiac tamponade and tension pneumothorax? Blood pressure will low in both cases. कार्डियक साउंड्स जो है वो मफल्ड होंगे टेंशन नीमोथोरेक्स में, बट नॉर्मल होंगे इन मैसिव हीमोथोरेक्स. टेंशन नीमोथोरेक्स में नॉर्मल होंगे मफल्ड हार्ट साउंड, बट कार्डियक टेम्पोनाट में मफल्ड होंगे बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द पेरिकार्डियल. ब्रेथ साउंड्स जो है वो कार्डियक टेम्पोनाट में दे विल बी नॉर्मल, बट दे विल बी एब्सेंट ऑन द कोलैप्स साइड. नेक वेन जो है वो डिस्टेंडेड होंगे इन द कार्डियक टेम्पोनाट, but they will be flat in the tension pneumothorax. Respiration इसमें normal होगी, but इसमें tension pneumothorax में there will be tachypnea. And treatment क्या होती है cardiac tamponade की? Is the needle pericardiocentesis or tension pneumothorax की, like we did earlier, is the initially is needle thoracostomy and then it's the tube thoracostomy. This is the normal shaped heart, you can see it here. But when there is a cardiac tamponade collection of blood, the heart is globular in shape like this. So how do you diagnose? It is basically a clinical suspicion. Check the X-ray के अंदर there will be enlarged globular heart shadow. If you do the X, there will be fluid in the pericardial sac. Central venous pressure will be high, and you can go for CT scan of the thorax and chest to rule out pericardial tamponade. अगर slow leak होता है, otherwise it's an emergency and you have to treat the patient urgently. Management में क्या होगा? Needle pericardiocentesis. We put in the needle in the pericardial sac and aspirate the fluid. How do we put the needle? We assess the need for intubation, oxygenate, and start volume resuscitation. Life-saving pericardiocentesis
is used to relieve the tamponade for definitive repair. ठीक है, this is a temporary measure. You just have to put the needle beneath the xiphoid process 45-degree angle, and you aspirate the contents out, the blood out, and then you go for the definitive repair. If it is due to the myocardial damage, you need to stitch the myocardium. So ideally you should go for emergency left pseudolateral thoracotomy to relieve the tamponade. ये कार्डियोसेंटेसिस है, you can see it here कि हमने नीडल कहाँ डाली है, ये xiphoid process है. Xiphoid process के just to the left of xiphoid process at a 45-degree angle, you put the needle. Wide bore की needle होती है 50 cc की, we put it in and we aspirate contents out. Now the third component of ATLS is the circulation and the control of hemorrhage. So first of all, you need to assess for shock, any external bleeding, any occult bleeding, which means that cannot be seen. Then estimate the blood loss on initial presentation of patient and the signs and symptoms. Replace fluid accordingly. And only 2 liters of warm saline warm crystalloids can be given. Why this is written only 2 liters of warm crystallite solutions can be given? Because in trauma patients, the ideal replacement fluid is blood, since blood is being lost. But blood takes time to arrange, cross match karna hota hai, you need to, arrange blood. So for that purpose, jab tak blood arranged ho raha hai, you can hydrate the patient with crystalloids. But you should not go beyond 2 liters because it will cause hyperdilution. Okay. Assessment here centers on 3 critical clinical observations. First is the conscious level, second is the skin color, third is the pulse. First indicator of shock is the pulse. Pulse will be rapid. Second will be the patient's skin color will be pale. And if shock persists, then third component, that is the decreased conscious level, will be there. So how you do it? You need to pass 2 large bore IV catheter. What do you mean by large bore IV cannulas? Means 18 to 16 gauge cannula should be passed. In trauma patient, not less than 18 gauge cannula should be passed. ठीक है? Warm normal saline या ringer lactate solution देते हैं. Blood कब देते हैं? You need to blood देते हैं and you need to control the bleeding by either direct pressure या operative control. And vasopressors, इसके ऊपर कट क्यों लगा हुआ है vasopressors का? That vasopressors are given late. ऐसा नहीं होता कि जैसे पेशेंट शॉक में आया है और उसका ब्लड लॉस हुआ हुआ है तो आप फौरन से vasopressors स्टार्ट करते हैं. vasopressors are dopamine, adrenaline, noradrenaline. ये क्या करते हैं? ये they increase the blood pressure either by peripheral vasoconstriction or by increasing the cardiac output. ठीक है, so they are not given on the empty system. अगर पेशेंट का ब्लड लॉस है तो जब तक आपने ब्लड को रिप्लेस नहीं किया तब तक you won't start the vasopressor because it will then aggravate the symptoms of the patient. So क्या हो गया? Disability. Now the fourth component is the disability. How A, B, C कर लिया हमने. Now the D. D के अंदर क्या है? Disability. उसके अंदर you check the neurological status of the patient. ठीक है, एक short हम check करते हैं. Neurological status जो है वो जैसा हमने पहले बताया था कि you check by Glasgow Coma Scale. But Glasgow Coma Scale it takes time. So simple हम जो करते हैं AVPU. AVPU जो है वो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिस्क्राइब करता है. ठीक है, हाउ व्हाट डज AVPU मींस? A stands for patient is alert. V is patient only responds to vocal stimuli. Like when you P अभी मैं पहले बता दूं and then I'll explain it to you कि हम कैसे इसको स्कोर करते हैं. P stands for the patient responds to painful stimuli. U is unresponsive. ठीक है, so AVP का क्या मतलब है? आप पेशेंट के पास गए and you looked at the patient and the patient is alert. He might be in severe pain, he might be in shock, but the patient is alert, so you will write that the patient is alert. A है. But when you reach the patient and the patient is sleeping and you say Assalamu alaikum, आपका क्या नाम है, and he or she opens his eyes, this means that the patient responds to vocal stimuli. Third is when you reach the patient, you said Assalamu alaikum, क्या नाम है आपका, and the patient did not respond. But when you gave pain to the patient opens the eyes. Thank you so much. Patient opens
his or her eyes, this means कि patient ने respond किया है with a painful stimuli. Painful stimuli आपने क्या किया, patient को either pinch किया over the sternum या between two eyebrows आपने patient को pinch किया तो उसने respond किया opening eyes. And unresponsive is ना उसने verbal command पे respond किया ना उसने painful command पे respond किया. So this is a quick assessment. It hardly takes a few seconds कि आपने patient के पास जाके करना क्या है. तो GCS जो है ना वो हम सेकेंडरी सर्वे में करते हैं, प्राइमरी सर्वे में we just do AVPU. ठीक है. E is for the exposure. Now exposure में you need to remove all the clothing from the patient because you need to examine the patient top to toe, front to back. ठीक है, आपने remove किए patient clothing, but you need to have a temperature controlled environment. ऐसा ना patient already shock में and then you are removing clothes तो patient जो है वो hypothermia हो जाए उसको. ठीक है, you need to remove all the clothes from the patient. And then you need to examine the patient from top to toe front. पहले आपने front पे examine कर दिया, then you need to perform the log roll in the patient. Log roll में क्या होता है? You turn the patient to the side and then examine the patient from top to toe from the back. ठीक है, log roll. ये जो यहाँ हो रहा है ना, ये log roll हो रहा है. Why do we do log roll? If you look at this picture, the cervical spine is secured by means of a Philadelphia collar. And 3 people are standing there to perform the log roll, which is turning of the patient. अगर हम एक बंदा सिर्फ patient को turn करेगा तो the spine can get injured. अगर कोई partial injury है thoracic या lumbar या sacral spine की, जब आपने turn किया तो patient की that injury can be converted into a complete injury. ठीक है, तो जो head end पे person होता है that is the leader जो कमांड देता है. एक पर्सन, this lady, she has one hand over the shoulder and other hand over the mid of the thigh. This lady has one hand over the hip joint and other over the knee joint. ठीक है, इससे spine stabilize हो गई. This leader, he will say 1, 2, 3 log roll. As soon as he will say log roll, they will simultaneously turn the patient and he will be stabilizing the cervical spine. And then क्या होगा कि जो एक और बंदा होगा, either he will go on to examine the patient from the back or another person will examine the patient from the back and do the DRE. ठीक है, अभी तक किसी को confusion है? Any confusion up till now? Any confusion? No? So now what are the adjuncts to the primary survey? You need to monitor the patient. There are various monitoring and various diagnostic procedures. ठीक है, प्राइमरी सर्वे के एडजस्ट में मॉनिटर में क्या करना होता है? ईसीजी मॉनिटरिंग करनी होती है. यू नीड टू पास द फुलीज कैथेटर टू सी द यूरिन आउटपुट. यू नीड टू पास द एनजी विद द गैस्ट्रिक कैथेटर. रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना होता है, एबीजीज एंड पल्स ऑक्सीमीट्री. अब डायग्नोसिस के लिए क्या क्या एडजंक्ट्स होते हैं? यू हैव टू डू द चेस्ट एक्सरे, यू हैव टू डू द पेल्विस एपी एंड लैटरल व्यूज एंड लैटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे. Excuse me, hold on. Wait. Okay, sure. So what are the adjuncts to primary survey? 3 एक्सरेज होते हैं जिनको we call the trauma series X-ray. No matter what kind of a trauma is there, you have to perform these 3 X-rays. ठीक है, कौन कौन से? चेस्ट एक्सरे, एक्सरे पेल्विस एंड द सर्वाइकल स्पाइन. ठीक है, ये 3 एक्सरेज आपने करने ही करने हैं इन एवरी पेशेंट ऑफ ट्रॉमा. और अगर कोई पेशेंट है विद जो आपको लग रहा है कि थाई बोन फ्रैक्चर है या आर्म फ्रैक्चर है तो वो एडिशनल एक्सरेज आप लेंगे, बट दीज 3 एक्सरे शुड बी डन इन एवरी पेशेंट. इनको ट्रॉमा सीरीज एक्सरे करते हैं.
DPL is diagnostic peritoneal lavage, which is now obsolete these days since we have an ultrasound fast. ठीक है, अल्ट्रासाउंड फास्ट क्या होता है? फोकस्ड abdominal sonography of trauma. This is done to rule out any intra-abdominal bleed. But these investigations, they should not interrupt the resuscitation process. ऐसा ना हो कि आप पेशेंट का जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है या उसको ऑक्सीजन लगी तो वो सब आप रिमूव करा के पेशेंट को जो है नेक्स्ट रेज के लिए भेज दें. Now comes the secondary survey. ठीक है, secondary survey, it does not begin until primary survey, that is A, B, C, D, E is completed. Resuscitative efforts are well established and the patient is demonstrating normalization of vital functions. ठीक है, what does this mean? कि ऐसा ना हो कि प्राइमरी सर्वे आपने किया और आपने देख लिया एक्चुअली पेशेंट को नीमोथोरेक्स और आपने ट्यूब पास नहीं की, आप जो है वो सेकंड सर्वे पे चले गए. Until the patient is normalized या at least on the way of normalizing, तब जाके you will start the second survey. ठीक है, secondary survey में you need to take a history from the patient. You need to examine the patient again from head to toe in a system wise. You have to put tubes or finger in every orifice, which means इसमें अब हम GRE करेंगे, इसमें फिर हम अगर फीमेल है तो per vaginal examination करेंगे. Complete neurological examination by means of a Glasgow Coma scale. Special diagnostic tests करेंगे and you will re-evaluate the patient. ऐसा ना हो कि आप प्राइमरी सर्वे में पहले कोई चीज मिस कर रहे हो. अब सेकेंडरी सर्वे के अंदर जो हिस्ट्री होती है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है एम्पल. ठीक है, इसमें आप डिटेल वैसे हिस्ट्री नहीं लेते ट्रॉमा के पेशेंट की, जैसे हम करते हैं कि पीसी, HOPC, सिस्टमिक रिव्यू, वो नहीं करते. वी टेक अ स्मॉल हिस्ट्री विच इज यू नो उसका निमोनिक बनाया है हमने एम्पल. एम्पल स्टैंड्स फॉर A is for allergies. You have to quickly ask the patient if he or she has any allergies. Medications, if he is currently on any medications, especially कोई blood thinners पे तो नहीं है. Then you have to ask for any past medical or surgical history. You have to ask for the last meal and you have to ask for the event or environment that is related to the injury. Why is it important? Allergies क्यों important है? Because the patient has presented to you in trauma. आपको नहीं पता कि patient को क्या क्या allergies है. He might be allergic to cephalosporins. He might be allergic to any other drug. और ऐसा ना हो कि आप उसको वो drug दे दे और फिर patient की symptoms aggravate ho jaye. Medications are very important, especially thinners and any medications that can cause drug-drug interactions. Past illnesses and operations are again very important to know कि आपने किस level तक की intervention करनी है. Last meal is important. Why? Because trauma के patients में sometimes we have to shift the patient immediately to OR और हमें उनको जो है वो general anesthesia देना पड़ता है. So for that purpose you need to know कि patient को क्या है last meal उसने कब लिया है. ठीक है, ऐसा ना हो कि उसने बस वो अभी ब्रेकफास्ट करके घर से निकला और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया. तो इन दैट केस क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि आपको पेशेंट एनेस्थेटिस्ट को पहले से इन्फॉर्म करना होगा कि पेशेंट ने अभी खाना खाया है, सो दैट वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले ले टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एरेटिंग. ठीक है, एंड इवेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड टू इंजरी में क्या होगा तो पूछना इवेंट जरूरी है. फॉर इंस्टेंस पेशेंट जो है वो he or she was crossing the road and was hit by a bike. अब बाइक से या कार से जब हिट हुआ तो यू हैव टू आस्क कि वो वहीं गिरा, दूर जाके गिरा, या जो है वो गिरने के बाद जो है वो किसी खड्डे में तो नहीं गिर गया, या गिरने के बाद कोई और गाड़ी उसके ऊपर से रोल ओवर तो नहीं होके चली गई. So that you can anticipate the injuries that can happen with the patient. ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक? Anyone? Any confusion till now? Any confusion?
Any confusion? No? Hello? Any confusion till now? No? Fine. भाई रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो. गुड. चलें जी. सो सेकेंडरी सर्वे में अब आपने क्या करना होता है? हेड को एग्जामिन में साइंस ऑफ स्कल बेस फ्रैक्चर देखने हैं. कोई उसको ब्रूजिंग तो नहीं है, रकून आइज तो नहीं है, बिहाइंड द ईयर कोई ब्रूजिंग तो नहीं है, नेजल ब्लीड तो नहीं है, साइज ऑफ द प्यूपल देखना है, हेमरेज ऑफ द कंजक्टिवा या फंडाई देखना है. You have to do the check the visual acuity in the patient, and then you have to see कि patient ने contact lenses तो नहीं लगाए, dislocation of lenses देखनी है, hyphema देखना है. So you need to have a detailed ocular examination and a head examination. Next comes the maxillofacial examination देखनी है कि associated with airway obstruction है, कोई major bleeding तो नहीं है, कोई tooth disimpacted तो नहीं है, cribriform plate की bleeding तो नहीं का fracture तो नहीं है. If there is fracture of the cribriform plate, do not pass NG in the patient. Then you have to check the neck, जिसमें cervical tenderness, subcutaneous emphysema, signs of esophageal injury, signs of laryngeal and tracheal injury, and carotid injury. ये सब हमें check करना है. सही है. फिर आपने चेस्ट इंस्पेक्ट करना है. चेस्ट करना, एग्जामिन करना है, तो उसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, एक्सरेज, ये पूरा डिटेल में चेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है. एक तो ब्रीदिंग में एग्जामिनेशन की थी, नाउ यू हैव टू परफॉर्म अ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन अगेन. देन एब्डोमेन की भी आपने एक उसके सर्कुलेशन में एग्जामिन किया था जल्दी से एब्डोमेन, अब आपको दोबारा से डिटेल्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करनी है. इंस्पेक्शन, ऑल्टेशन, पैल्पेशन, परकशन, रीइवैल्यूएट एंड स्पेशल स्टडीज लाइक अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई सीटी कराना है, कोई ये चीजें करानी है, तो दैट यू हैव टू डू. दिस राइट हियर इज द सीट बेल्ट मार्क. ठीक है. सीट बेल्ट मार्क है क्योंकि वो पेशेंट ने बेल्ट लगी हुई थी बट हाई वेलोसिटी इंजरी हुई, तो ये पूरा सीट बेल्ट मार्क है. अब जब सीट बेल्ट मार्क किसी पेशेंट में, देयर इज अ सेपरेट सेट ऑफ separate set of things that can go wrong with the patient, like aortic disruption हो सकती है, head of pancreas की injury हो सकती है, duodenal rupture हो सकता है. There is a separate set of injuries that can happen with the seat impact. Then you have to examine the perineum of the patient for any contusions, hematoma, lacerations, urethral injuries. Rectum में DRE करनी है, sphincter देखनी है, कोई higher riding prostate तो नहीं है, pelvic fractures तो नहीं है, vagina को per vaginal examination करनी है for blood and laceration. Then you have to do the musculoskeletal examination, जिसमें you have to check for the contusions, deformity, any pain, perfusion देखना है, पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर स्टेटस देखना है कि पेशेंट का कहीं नमनेस, वीकनेस तो नहीं है. यू हैव टू परफॉर्म अ सेपरेट सेट ऑफ एक्सरेज. नाउ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फिर दोबारा अब हम करेंगे, पूरा कंप्लीट ग्लासगो कोमा स्केल करेंगे. Then you have to check for the lateralizing signs. You need to frequently reevaluate the patient and prevent secondary brain injury. ठीक है. फिर आप spinal cord and the complete motor and sensory examination करेंगे. And if the patient is showing any signs of numbness or loss, then you will go for imaging and you will check the reflexes as well. This is the Glasgow Coma Scale that I was talking about. जिसमें क्या होता है, EVM हम eye opening assess करते हैं, verbal response assess करते हैं, motor response assess करते हैं, then we give a score. This is a constant. If the patient, you go to the patient and the patient is opening, has his eyes opened, or he's opening and closing his eyes spontaneously, this means the score is 4. If the patient, if you go to the patient and you say Assalamu alaikum, आपका क्या नाम है, और वो eyes open करो, तो that's is 3.
If you have to give pain and then the patient opens his eyes, then you have to give score of 2. ये 3 लिखा हुआ है, sorry, it's 2. And if does patient does not show any response, then it's a score of 1. Verbal response के अंदर क्या होगा? If the patient is having a normal oriented speech, you will give a score of 5. If you're talking to the patient and the patient seems confused, you give a score of 4. If you talk to the patient and he or she talks inappropriately, like आप पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है और वो कह रहे हैं सुबह 10 बज रहे हैं, any confused inappropriate speech, then you have to give a score of 3. And if the patient is making incomprehensible sounds, like you go to the patient and the patient जो है वो inappropriate sounds बना रहा हो, इस किस्म की आवाज आ रही है, that's a score of 2. And if there is no response, no verbal response, then you give a score of 1. Then comes the motor response. The patient follows your command, like आप patient को कहें कि अपना हाथ सीधा हाथ उठाओ और patient हाथ उठा ले, this means the score is 6. If you know you go to the patient and you pinch his right hand और वो left hand से लाके अपना right hand जो है वो या आपका hand पकड़ ले, this means he is localizing to the pain and you have to give a score of 5. If you pinch the right hand and he or she withdraws the right hand, this means you give a score of 4. If you pinch and he flexes to pain, this is 3. And if you pinch and he or she extends to pain, that you give a score of 2. And if you pinch the patient and he or she does not show any motor response, you give a score of 1. So the total जो minimum score भी होगा, जो dead patient भी होता है उसको score भी 3/15 होता है, ना eye opening होती है, ना verbal response होता है, ना motor response होता है, और जो comatose patient होता है उसका भी 3/15 का GCS होता है. Now there are various adjuncts to secondary survey, like special diagnostic tests होते हैं that can be performed if need be. Like for instance, if the patient is in need of a CT scan, you can perform a CT scan. If the patient needs contrast X-ray studies like barium swallow, gastrographin, you have to perform that. If need be, like you're expecting any peripheral fractures, koi arm ya the patient's condition, that you can go for various set of X-rays or investigations. Now definitive care में क्या होता है, either the patient needs to go to the OR, that is the operation room, operating room, or the patient might go to the ICU, or the patient might need to be referred to some other specialty if that case is not available in your setup. ठीक है जी, तो क्या करेंगे इसके अंदर? Now this was the end of it. Thank you. अब मुझे बताएं कि इसके अंदर किसी को कोई confusion है, तो you can feel free to ask. Any confusion up till now? No confusion up till now. Okay. So let's have a small quiz. Okay. Let's have a small quiz. I will throw a question in the chat box and you have to answer.
This is your question. अस्सलाम वालेकुम. ये सर बताएंगे, मैं लेक्चर में हूँ, मैंने सर से पूछा था, अभी तक तो कुछ नहीं बताया. ओके. Okay, so did you get the question? 6 years old male patient presented in ER emergency room after RTA, means road traffic accident. He is opening his eyes to pain, having inappropriate speech. He is making inappropriate words and is localizing to pain. What is his GCS? Glasgow Coma. ब्रेकअप करके EVM बताइए. Did you understand the question? 11. No. I want answer to be as EVM. E means eye opening, V means verbal response and M means motor response. Okay, उसमें डिवाइड करके आप मुझे बताएं E का स्कोर क्या है, V का स्कोर क्या है and M का स्कोर क्या है. Eye opening to pain है, verbal response में inappropriate words हैं and motor response में he is localizing to pain. ठीक है. Pain score is 6. No. Yes. EVM. So this is Paula. Paula, eye opening 4 होगी pain पे. No. Eye opening will be 2. ठीक है. Eye opening हम total 4 score लेते हैं ना. If the patient has his eyes open, this means कि 4 है. अगर वो verbal response पे है तो 3 है. If pain पे है तो 2 है. So eye opening will be 2. He is making inappropriate words. So this will be 3 and verbal will be 3 and he is localizing to pain. Localizing pain is 4. मोटर का होगा 4. तो टोटल स्कोर विल बी 9/15. समझ आ रहा है आप लोगों को? हाउ विल यू आंसर? EVM 9/15 का GCS होगा. ठीक है. दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज This is your second question. A patient presented in ER after a fall from height. He is having a pulse of 130 beats per minute, a blood pressure of 90/60. He is having jugular distension and decreased heart sound. What is the diagnosis? Is he having tension pneumothorax, cardiac tamponade, massive hemothorax, or cardiac infusion?
Good. It's cardiac tamponade. So define color coding of triage. Color coding of triage. This is from the first lecture that we did. Yellow, green, red. Yes. And कितने color codes होते हैं? Yes, there are four: black, yellow, green, red. अब explain करें what goes in black, what goes in green, what goes in yellow, what goes in red. Black is for dead. Very good. Then what does red means? Red means yeah, critical or patient who needs immediate. Yes. What does green means? Green means green can wait for a while. No, green means minor injuries, walking wounded जो होते हैं, सिर्फ laceration है, cut है. These are the green ones. And what does yellow means? What does yellow means? Yes, who can wait for a while. ठीक है, उनको immediate treatment नहीं चाहिए, but they can wait for a while. Very good. So you guys are having a good. The next question is what are trauma series X-rays? कौन से होते हैं trauma series के X-rays? What are trauma series X-rays?
Very good, Zubia. X-ray of chest, cervical spine, and pelvis. No, extremity and contrast X-rays, they are not trauma series. वो secondary होते हैं if need be like, ठीक है? और जो trauma series X-ray, that is X-ray chest, cervical spine, and X-ray pelvis. ठीक है? Now another question is, what is fast? What is what is fast? Google search कर रहे हैं. So fast is focused abdominal sonography of trauma. सही है. Focused abdominal sonography of trauma is FAST. FAST is ultrasound that we do. It is a very quick ultrasound that we do in cases of trauma to rule out any intra-abdominal bleeding or any intra-abdominal fluid. इसमें क्या करते हैं? Why it is called focused abdominal sonography of trauma? इसमें प्रोब सिर्फ 4 जगह रखते हैं, ठीक है? एक रखते हैं राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है, टू सी एनी फ्लूइड, राइट एंड लेफ्ट आइलियक फोसास में, एंड 5वीं जगह कभी भी रख देते हैं इन द जस्ट बिलो द ज़िफॉइड टू लुक फॉर पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है. सो दिस इज फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा एंड इट इज डन इन केसेस ऑफ, इट इज ऑल्सो एन एडजंक्ट प्राइमरी सर्वे. जैसे ट्रॉमा सीरीज एक्सरे होते हैं उसके बाद फास्ट करते हैं टू रूल आउट एनी एब्डोमिनल इंजरी. ठीक है. सो any confusion? I'm wrapping up this lecture. Trauma is done. From next time we'll be doing some other topic. Any confusion up till now? No. Thank you very much. Stay safe and good luck. Allah Hafiz.